How do you solve problems in your daily life? Or how do you typically tackle challenges and complex situations in your life? जैसे कि हम सब जानते हैं प्रॉब्लम्स या चुनौतियाँ हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। यहाँ पर इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है क्या आप कोई स्पेसिफिक अप्रोच का यूज़ करते हैं, क्या आप कोई स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, क्या आप कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज़ करते हैं ताकि आप एक बेटर रिजल्ट्स तक पहुंच सके। जानिए through this sample video how we can answer this question. I believe there are two approaches of problem solving. First is prevention and second is intervention. Prevention means बिगड़ने से पहले संभालना and intervention means बिगड़ने के बाद संवारना. Prevention is always better than intervention. In my problem solving strategy, I always follow 5 steps which I called 5 C's of problem solving. First C is clearly specify the problem that needs to be solved. Second, collect all the information that you need to solve the problem and see all the alternative ways. Third C is compare the advantages and the disadvantages of all the alternatives that you have. Fourth C is choose and implement the best one which has minimum disadvantages and maximum advantages. In the last, considering the consequences of the solution, what worked out and why, and what did not work out and why, so that I can repeat the strategy that gave me positive result and I can change the strategy that gave me negative result. So next question could be, how do you prioritize your work, or how will you handle pressure at work, or how will you balance your professional and personal life? यहाँ पर बेसिकली इंटरव्यूअर आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता को चेक कर रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं वर्क पे प्रेशर होना बहुत कॉमन है। वो जानना चाहता है कि क्या आप समय से अपना काम उनको कंप्लीट करके दे पाएंगे या नहीं। एंड हियर इज द सैम्पल आंसर। टू बैलेंस माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, आई प्रायोरिटाइज माई वर्क. टू हैंडल प्रेशर एट वर्क, आई फॉलो अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बिकॉज आई बिलीव well begun is half done. Thereby, I plan each day for completing my work efficiently. In my planning, I follow time matrix technique in which I distribute my work and time according to their importance and urgency. At my priority, I start completing with those works which are important and urgent, whose deadline is near. Secondly, I do those works which are important but may not be so urgent, which brings me closer to achieve my goals on time. And lastly, if the time permits, I do small works which may not be so urgent and important. Thank you. Why should we hire you, or how can you say that you are fit for this job, or why do you want to work with our company? यहाँ पर बेसिकली इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है वेदर और नॉट यू आर फिट फॉर द जॉब। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपने रेलेवेंट कोर्सेज किए हैं जो वो जॉब की डिमांड है। नंबर 2, यू हैव द राइट स्किल्स एंड नॉलेज जो आपको उस जॉब के लिए फिट बनाती हैं। नंबर 3, अपनी कुछ क्वालिटीज़ बताइए, जैसे कि आपका लर्निंग स्टाइल, आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एंड लास्टली, सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी की रेप्यूटेशन, कंपनी का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, दैट इज़ वाई यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द कंपनी। एंड हियर इज़ द सैम्पल आंसर। I believe you should hire me for the following reasons.
First point, I have done all the relevant courses according to your job description. Second point, I also have suitable knowledge and technical skills that you are looking for. Third point, I am a fast learner and believe in high quality work. Fourth point, I would like to add that I work well both as an individual and also a team member. Fifth point, what I feel about your company is that it has an excellent work culture, provides good platform, and also have a good reputation in the industry. I work for such a company to shape my career and wants to utilize my potential and skills for the organizational growth. Collectively, all these skills put together make a complete package for the job. Thank you. The next question could be, what is your salary expectation? और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सैलरी एक्सपेक्टेशन बताते हुए आपको कभी भी एक डायरेक्ट अमाउंट कोट नहीं करना चाहिए. दैट गिव्स अ वेरी अनप्रोफेशनल इम्प्रेशन अबाउट यू. सो सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए कि आपने इस जॉब के लिए थोड़ी रिसर्च करी है और एज पर दिस इंडस्ट्री एवरेज सैलरी पैकेज आप एक कंपनसेशन पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं जो कि आपके पोटेंशियल को जस्टिफाई करता है और आपको इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी देता है. अगर फिर भी आपका इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है और आपको कहता है कि आप एक अमाउंट बताइए, सो इट्स अ गुड आइडिया टू कोट द अमाउंट इन अ रेंज. यानी कि आप मिनिमम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं टू द मैक्सिमम सैलरी दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. And here is the sample answer. Thank you for allowing me to share my salary expectation. I am aware that this position offers me a lot of growth and learning opportunities, and I am excited about working for this organization. I have researched about this job role. As per the standard industry average salary for my experience level, I am hoping for a compensation package that is competitive within the market and reflect my potential and growth within the company. Towards the end of the interview, there are chances कि interviewer आपसे पूछे, do you have any questions for us? So let's see how do we ask some wonderful questions. Kindly let me know how many questions I am allowed to ask. You are allowed to ask 3 to 5 questions. Okay, so my first question is, till when and how do you communicate whether or not I have been selected? That's a great question. You have to wait till 3 days. We will communicate you through an email or a call. अगर 3 दिन तक भी आपको हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन रिसीव नहीं होती है, in that case you can email us or call us. My second question is, what are the next steps after the selection? After selection, you will receive a letter of intent or offer letter from our side, which will have the following details. Number 1, day, date and time of joining. Number 2, the list of documents that you need to submit on the day of joining. And number 3, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन आपका एक ओरिएंटेशन सेशन होगा. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ बेटर मैनर. My third question is, if I am hired, what will be the top 3 and 5 expectation that you expect me to accomplish as soon as possible? Top 3 expectation from our side will be, number 1, be regular and on time each day of your work. Number 2, timely completion of your work with sincerity and excellence. And number 3, be a reliable and responsible employee of our company. My last question is, will there be a on-job training for this role? Yes, there will be a basic on-job training that will help you to understand this role better and perform in a better manner.
and the duration will depend upon how quickly you learn. Thank you so much everyone for watching our video. I hope इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कुछ बेसिक क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाए. इन केस अगर कोई क्वेरी रह गई है, डू कमेंट बिलो. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, सो प्लीज़ शेयर इट विद समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यू. See you next time.